welcome to the next part of the video for the real numbers, and in today's video we will be studying about what is the bifurcations for the terminating and non-terminating, and we will be seeing about the proofs for the irrational number, which is the main important part of this chapter. So let's go and let's find out what is the bifurcation for terminating and non-terminating. So first of all, the decimals can be bifurcated as terminating. Terminating is nothing but the finite. Finite is like I can say where the remainder is 0. Remainder comes out to be 0. And terminating, and we have non-terminating. Non-terminating is non-finite. Non-terminating. If they are non-terminating, the remainder will not be 0. कभी रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि वो टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहे. इट्स नॉट गोइंग टू एंड एनीवेयर. सो टर्मिनेट मतलब एंड होना किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जहां पर आपको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, एंड नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि एंड नहीं होना तो आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा. अगेन व्हाट वी कैन सी इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. It can be non-terminating. Non-terminating तो already है ही. Non-terminated is being divided into non-terminating repeating decimals. Repeating decimals. And one is non-repeating decimals. Non-terminating and non-repeating. Non-repeating को non-recurring भी बोलते हैं and इसको recurring भी बोलते हैं. So repeating, non-repeating. So these are the two parts. If they are repeating for sake, if I have 5.252525. So it is repeating. So I can write it is as 5.25 bar. क्योंकि बार हम तब लगाते हैं जब कोई नंबर रिपीट हो रहा है. So 25 is repeating again and again. So I can take 5.25 bar. If it is repeating, then such a number is known as rational number. ऐसे नंबर को बोलते हैं rational number. And if the number is non-repeating, for an example, the number given to you is 5.1010100010001000 and so on. ऐसे टाइप का कुछ नंबर है जो कि रिपीट नहीं हो रहा, मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग ऑल्सो, रिपीट भी नहीं हो रहा है. तो रिपीट नहीं हो रहा है तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में आता है. इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स. इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स. सो इफ यू सी पाई का वैल्यू भी एक तरीके से इर्रेशनल होता है. 3.14 so and so on, it goes on. So the numbers which are non-terminating and non-repeating are irrational number. Again and again I am focusing. So we have to study what do we mean, what are the proofs, how we can prove for the irrational number. We will be seeing one of the theorem and following that algorithm we will be proving the sums. So and the repeating is rational numbers. तो हम लोग देखने वाले हैं अभी irrational numbers के proof कैसे हम solve करेंगे. Then we will be moving ahead for the rational numbers too. Just by non-dividing, how we can find out is the given number is terminating or non-terminating, means if the remainder comes out to be 0 if it is terminating, and if it is not 0 for non-terminating. So I hope यह bifurcation आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे non-terminating terminating है, उसके बाद rational और irrational को bifurcate किया गया है. So let's start with the proofs. So let's have a look on the theorem here. Let P be a prime number. P कोई तो भी एक prime number है. Prime numbers are what? The numbers which can divide by itself or by number 1. So if P divides a square, P किससे divide हो रहा है? a square से. अगर P a square से divide हो रहा है तो theorem हमें बताती है then P divides a. अगर P a square से divide हो रहा है तो P a से भी divide होगा. This is being given by the theorem. Theorem मतलब कि जो कि आपको बताए कि ये चीज होती है. This is existing. So then P divides a. अगर P a square से डिवाइड हो रहा है तो P a से भी डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, एंड वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर. a कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है. सो इंटीजर्स आर कैन बी एनी नंबर, एंड इफ इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर आई कैन से दैट दिस नंबर विल बी द नंबर विच इज एन होल नंबर. इंटीजर है तो फ्रैक्शन नहीं होगा, एंड प्लस पॉजिटिव है तो इट विल बी मोर देन 0.
So it will be a positive integer. So I hope what do we mean by the theorem must be clear. If p divides a square, it will divide p by a. This same logic we will be using in the proofs to prove that the number given to you is a rational or an irrational number. So when we will do the proof, so you will be comfortable with, once you will have the algorithm with you, एक सम हम लोग देख करके उसका algorithm समझ लेंगे तो आपको आसानी होगी ये theorem समझने में. So let's have a look. Let's have a proof here. Prove that root 2 is an irrational number. Proof करना है कि root 2 irrational number है. तो ये पूरा सम अच्छे से समझ लेंगे, देन हम लोगों को बिल्कुल परेशानी नहीं होगी कि आगे के सम्स को कैसे प्रूफ करना है, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर है, एक एल्गोरिथम है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा ये प्रूफ करने के लिए. So let's see here and be attentive while seeing the sum. So what we have is root 2 को irrational proof करना है, but we don't know. So we will take let root 2 be a rational number. Let be a rational number. इसको rational number मान लेते हैं. So if it is a rational number, I can write root 2 is equals to a upon b, where a and b are co-prime numbers. A and b are co-prime. Co-prime मतलब कि उनके कोई common factors नहीं होंगे. अगर कोई common factors नहीं होंगे तो those numbers are co-prime numbers. अच्छा, अभी हमको प्रूफ करना है कि अगर यदि हमने ये प्रूफ कर दिया a and b के एक से ज्यादा फैक्टर है, तो can we say that कि they are not co-prime? And if they are not co-prime, they won't be a rational number. They have to be an irrational number. So number can be a rational or an irrational. So if it's not a rational number, then it will be a irrational number. तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये a और b के एक से ज्यादा फैक्टर हैं, so that the numbers will not be a co-prime number. So let's have a look how we can do that. Can we square on both the sides? Root 2 square is equals to a by b का whole square. Squaring on both the sides. Squaring on both the sides. So if we square on both the sides, you will get root 2 square comes out to be 2 is equals to a square upon b square. We can write this as 2b square is equals to a square. 2b square is equals to a square. ये a square नीचे ले आऊंगी तो 2 upon a square होता है. So therefore we can tell that a square 2 is divided by a square. 2 is divided by a square, and by the theorem we can prove that, we can say that if 2 is divided by a square, 2 is also divided by a. 2 is divided by a, and if 2 is divided by a, we can say that a is nothing but is equals to 2c, where c is some integer. Where c is some integer. So this is a process where we need to follow. सबसे पहले उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद a स्क्वायर अपन b स्क्वायर आया, तो यहाँ से हम लोग दे सकते हैं कि 2 is divided by a square. And the theorem suggests if the p divided by a square, it is p divided by a. This has been given by the theorem. So same thing we are following here. Same thing we are following here. 2 divided by a square, which gives 2 divided by a. And a can be equal to 2c, where c is some integer, where a used to be some positive integer. So here also c is some positive integer. So this is from the theorem which we have, by the theorem stated above. Now a is equals to 2c, where c is some integer. Can we say that, can we square on both the sides? We will have a square is equals to 4c square. A square is equals to 4c square. Now what we can do is, we can find out, we have the value for a square as 2b square. Can we write down the value for a square as 2b square? We will replace it and 4c square. So this will get cancelled out and you will get b square is equals to 2c square. Fine. Now you can tell that b square is 2 is divided by b square. Again how we wrote it is 2 is divided by a square. यहाँ पे अगर मैं b square नीचे ले जाती हूँ तो 2 is divided by b square in this. So 2 is divided by b square. And by the theorem we can say that 2 is divided by b. 2 is divided by b. So where we can say that again b is some integer. If b is some integer, we can take b is equals to 2d or somewhat, and the theorems goes on. So from here we can contradict that हम लोगों ने माना था कि √2 a upon b है and a and b are the co-primes माना था. Co-primes means no common factors. So here we can say that a and b have at least two common factors.
दो कॉमन फैक्टर्स तो आप लोगों को दिख रहे हैं क्योंकि a इज इक्वल्स टू 2c भी है और a इज इक्वल्स टू b का भी फैक्टर है. सिमिलरली b d के साथ भी है और a के साथ भी है. सो इट हैव मोर देन वन फैक्टर, टू फैक्टर्स. सो वी कैन राइट अ स्टेटमेंट सिंस इट कॉन्ट्रडिक्ट्स अ स्टेटमेंट. कौन सा स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है? रैशनल नंबर वाला स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है क्योंकि √2 इज नॉट a अपॉन b, क्योंकि a अपॉन b प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर नहीं है. कॉन्ट्रडिक्ट्स अ स्टेटमेंट as a and b have at least two factor. at least two factor, दो फैक्टर तो है ही, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, हमने चेक नहीं किए. at least two factor. So √2 is an irrational number. √2 is an irrational number. So I hope the proof for √2 must be clear. तो क्या करना है, केवल इतना ही करना है कि √2 को पहले स्क्वायर करेंगे, दो नंबर्स के इक्वल ले लिया. ये लिखना बहुत जरूरी है कि दोनों को प्राइम है क्योंकि यही चीज है जिसको हम कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं एट द एंड. a square upon b square by the theorem 2 is divided by a square, 2 is also divided by a by the theorem. Similarly we can take for any integer and then again we can find it for the b, so that we can say that it has more than two factors or at least two factors, so which contradicts our given statement, and we can say that √2 is not a rational number, it is an irrational number. So this is a procedure which we need to follow for to prove such types of irrational number. I hope this must be clear. Furthermore, we will be doing few sums more so that you will have a feel how we can write these types of questions. Now the question given to us is prove that √5 is an irrational number. √5 को irrational prove करना है. Again we will go with the same procedure. मैं पूरा स्टेप्स इधर नहीं लिख रही हूँ. You can see it from the last sum. √5 को a upon b ले सकते हैं and a and b are the co-prime numbers. a and b कैसे numbers हैं? Co-prime numbers हैं. Again and again I am mentioning that squaring on both the sides you will get a upon b का whole square, which will give you 5 is equals to a upon b. Correct? a square upon b square. So again you can write it down, 5b square is equals to a square, and from this statement therefore 5 is divided by a square. Alright, 5 is divided by a square. 5 divided by a square implies that 5 divided by a by the theorem. By the theorem we can say that 5 divided by a, and if 5 divided by a we can say that a is some natural integer where a is nothing but is equals to 5c, where a is equals to 5c. Why 5? Because of the number 5 which we have. So a is equals to 5c, where c is any integer, any positive integer according to the theorem. We are just following the steps of the theorem. So a is equals to 5c है. Now what we need to do is a 5c है, a की जगह पर again we need to square it. If we square you will get a square is equals to 25c square. Correct? And what do we have? A square is 5b square. तो उसको replace करेंगे and we can say that it will 25c square. If you cancel this you will get 5. So b square की value आ गई 5c square. Correct? So from here we can write 5 is divided by b square, and if 5 is divided by b square, again by the theorem we can say that 5 is divided by b. If 5 is divided by b, again we can say that it contradicts our statement of co-prime numbers, and if it contradicts our statement we can say that √5 is an irrational number. √5 is an irrational number. तो आप लोगों को लिखना वैसे ही है जैसे कि हमने लास्ट सम में लिखा था. तो प्रूफ हम लोग इस तरीके से, कोई भी रूट का नंबर आएगा तो ऐसे कर लेंगे. तो बोलने वाली बात यह है कि अगर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर यदि जैसे रूट के अंदर 4 होता, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, तो हम लोग इसको 2 लिख लेते. √4 इज नथिंग बट 2. अगर रूट के अंदर 9 होता तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3. सो अगर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर छोड़ करके कोई नंबर रूट के अंदर दिया है, वो सारे नंबर होते हैं इर्रेशनल नंबर. सो परफेक्ट स्क्वायर छोड़ देने हैं, बाकी सारे नंबर है इर्रेशनल नंबर. एंड कैसे प्रूफ करना है? रैशनल पहले उसको मान लेंगे एंड देन वी विल प्रूफ इट विद द हेल्प ऑफ द थ्योरम, एंड द प्रूफ इज हियर. द एल्गोरिथम फॉर द प्रूफ इज हियर. So we will be seeing how we can use these sorts of proofs to solve next few sums. Now the proof is, we need to prove that 3√2 is an irrational number. 3√2 irrational number है. पहला स्टेप है कि हम 3√2 को रैशनल मान लेंगे. Let 3√2 be a rational number. It be a rational number. यही हम लोग मानते आ रहे हैं जितने भी प्रूफ अभी तक हमने किए. So 3√2 is nothing but a upon b.
If it is upon a upon b, can I write it like this? ये 3 को नीचे ले जा करके ऐसा लिख सकती हूँ, where a and b are rational numbers, correct? Root 2 is equals to a 3b. So from here can we say that if a and b are also rational, 3 is a rational number? Yes. So I can say a 3b are the rational numbers. ये तीनों के तीनों क्या हैं? Rational हैं. So rational divided by rational, rational multiplied by rational will give you a rational. So in short, this full part is a rational number. And अभी हमने प्रूव करा कि √2 कैसा नंबर है? √2 is an irrational number. So ये बात कॉन्ट्रेडिक्ट हो रही है. क्या कॉन्ट्रेडिक्ट हो रही है? हमने बोला कि √3√2 रैशनल है. अगर इक्वल टू की चीज रैशनल आ रही है तो ये भी रैशनल ही होना चाहिए. अगर ये रैशनल नहीं है तो ये क्या रैशनल हो सकता है किसी भी तरीके से? नहीं हो सकता. सो दैट्स कॉन्ट्रडिक्ट. वी नो दैट √2 इज एन इरैशनल नंबर which contradicts our statement. This contradicts our statement. Which statement it contradicts? It contradicts this statement कि ये rational है. ये वाले statement को contradict कर रहा है. And therefore we can say that 3√2 is an irrational number. 3√2 कैसा नंबर है? Irrational number है. I hope this sum was quite easy because अगर आपको √2 कैसे irrational proof करना है, √5, √3, √11 ये सारे contradiction मालूम है तो आप आराम से ये statements लिख सकते हैं and we can prove that कि it is not rational and irrational. क्योंकि ये जब equal to में rational बोल रहे हैं तो ये rational होना जरूरी है. Rational can be only equal to rational or irrational can be equal to irrational. So we are letting this. So our let is our contradiction is wrong. Our assumption is wrong. If our assumption is wrong, the number given to us is an irrational number. So I hope these types of problem must be easy and will be understandable by you because इसमें कुछ नहीं है, एक algorithm ही आपको follow करना है. वो algorithm आपने follow किया, आराम से proofs हो जाते हैं. बस just you need to remember the algorithm, which is important. That's why these questions are little tricky and important. That's it. Let's have a look on this question. Prove that 3 plus 2√5 is an irrational number. किसको prove करना है? 3 plus 2√5 को irrational prove करना है. पहले तो हम rational ही लेंगे and it will be equal to a upon b in that case. Correct? अच्छा, आपको सबसे पहले भी ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो कि आपको irrational दिख रहा है. So √5 is an irrational. अभी थोड़ी देर पहले ही हमने प्रूफ करा कि √5 कैसा नंबर है? irrational नंबर है. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? √5 को एक जगह पे छोड़ के बाकी सारी चीजों को इधर ले जाएंगे. So 2√5 is equals to a upon b. ये 3 को मैं इधर ले गई तो it will be -3. So 2√5 will be equal to a minus 3b upon b if I take the LCM. Correct? So what I need to do is if I take this 2 here, so I can write √5 is equals to a minus 3b upon 2b. And I know that a, 3, 2, b, all these 4 terms are the rational numbers. These are the rational numbers. अगर ये rational number है तो इसके division, multiplication, subtraction वो भी सब rational number ही आने वाला है. In short, I can say that this full is rational number. अगर ये rational number है, but we know that √5 is an irrational number. Since √5 is an irrational number, √5 is an irrational number, it contradicts our statement. It contradicts our statement. Therefore, we can say that this number 3 plus 2√5 is an irrational number. This is also an irrational number. I hope these types of questions must be easy now. अभी समझ में आए होंगे शायद आप लोगों को कि किस तरीके से ये सॉल्व करने हैं. अगर कोई ऐसा बड़ा नंबर मल्टीप्लिकेशन के साथ दिया है तो उसको हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, एक √5, √6, √11, √10 जो भी दिया हुआ है वो एक साइड में रख के बाकी ये सारे नंबर इस साइड ले जाएंगे. एंड वी विल बी नोइंग दैट वी कैन सी दैट all the numbers which are there on the right hand side part, we can say that those are the rational numbers. If you subtract 2 rational number, you will get rational number. If you multiply 2 rational, you will get 2 rational. If you divide 2 rational, you will get 2 rational. So this whole number will be a rational if all these a, b, c, 3 and 2 are rational. But we can say that rational cannot be equal to irrational, and we know that √5 is irrational, which we have already proved earlier. We can directly write in the statement, since √5 is an irrational number which contradicts our statement, therefore the given problem is not an rational, it is an irrational number.
सो आई होप द इरेशनल के प्रूफ्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे. इट इज लिटिल ट्रिकी एंड लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टू रिमेंबर, बस उतना ही है. एल्गोरिथम अगर यदि आपने अच्छे से देख ली और समझ ली तो उसके बाद कुछ भी नहीं रह जाता. दस द p डिवाइड बाय a स्क्वायर, सो p डिवाइड बाय a एंड वेयर a कैन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. यही थ्योरम है जो आपको याद रखनी है. आई होप दिस lecture, this video must be informative to you. If you liked it, please like, share and subscribe even with your friends. Thank you, bye bye, and we will be seeing the terminating, non-terminating part in the next video. Thank you.